We will have some tests, analysis of those tests, and hopefully after the session is concluded tonight, you improve on your test taking strategy. So this will be the outline of the session. We'll start off with importance of strategy. I'll discuss on it a little bit. Then I'll go ahead and discuss a little bit on how to identify questions and what are the importance of identifying those questions and how to make those judgment calls while you are scanning the paper. Now, the more important part you have to think on going ahead each and every day is while you're taking the test, whichever test you're taking, mocks or sectional test, whichever test you're taken, have you made the correct decisions in choosing the questions? So, which questions you should choose to solve and how you should take those decisions. So, those are the important skill sets that will give you the last boost. So that is the main agenda of this session. Initially, when you are taking a decision on whether to solve this question or not, it should not be loosely made on the basis of which area this question belongs to. So when you are reading the question, after reading the question, as I mentioned in the last slide, so once you have understood what the information are and what the requirement is, what could happen in your mind? So after, let me just write this down. So after you have collected all the information and you have understood what is required, so what is the objective, whatever is the objective. So once this is done, you should be able to understand what is the best way to approach and find the answer. If that structuring is happening automatically when you're reading the question, so those questions are something which you solve straight away. So if the structuring is not happening, but then you have a feel that this will happen in a certain direction, in a certain way, or the structuring is happening and you're identifying that it might be a little time consuming. So either of those two cases, you mark it for review. So what I'm going to do is I'm going to give you 10 seconds to read the question. Let's say 15 seconds to read this question, and each one of you take this decision. Whether you solve it right away, you mark it for review, or you move ahead. Was able to go till the last question. Yeah, that is very important, right? And whichever sequence you're answering the questions, either first to last or last to first. Some people have those straight strategy, starts for the last and then goes for backwards. Whichever order you are answering the questions, it is. If you don't have a solid strategy, then there's always a high chance that you miss out maybe some questions which are relatively easier because your scanning was weak. So this is a very vital part of test taking. Keep that in mind. It's not about how familiar you are with the question. Don't take decisions on the basis of familiarity. So first of all, work on ki matlab whether the decision was incorrect or whether the decision was correct, but still you got stuck in because of some how to put it. I mean, maybe some structural problem. मतलब structural problem in the sense कि मतलब कोई जो बोला calculation कर दिया या कोई information गलत पढ़ दिया. So try to identify that. So while you are scanning, you should always focus on only those questions जो immediately solve होगा. But on an average एक क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा? पढ़ने से हाँ कॉम्प्रीहेंड करने में 15 to 20 सेकंड, चल 20 सेकंड से ज्यादा तो नहीं हो सकता, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो ऑन एन एवरेज अगर 20 सेकंड भी लगता है, लेट्स से इन अ पेपर सपोज यू हैव 24 क्वेश्चन, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो टाइप का ले रहा हूँ, ठीक है? तो 24 क्वेश्चन अगर होता है तो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस यू आर स्पेंडिंग 8 मिनट्स, राइट? यहाँ तक ठीक है? एक सेकंड, कोई मैं जस्ट एडमिट कर देता हूँ. तो 20 सेकंड 24 क्वेश्चन भी अगर होता है, आई थिंक इन दिस पेपर दैट यू टुक देयर वर 22 क्वेश्चंस, राइट? तो अगर इसमें 20 सेकंड और 24 क्वेश्चंस भी होता है तो जस्ट फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन 8 मिनट लग रहा होगा. और ईच एंड एवरी क्वेश्चन, द एंटायर पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट, द एंटायर सेक्शन, क्यूए सेक्शन. अब लेट्स से जो मैंने बोला कि ड्यूरिंग द स्कैन सपोज तुमने 6 to 7 क्वेश्चंस मार्क किया, सॉरी सॉल्व किया, तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस ये क्वेश्चंस करने में तुम लोग को पढ़ने के बाद 1-1 मिनट और लगा होगा, क्योंकि दोज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर आइडियली सॉल्विंग, राइट? सो इफेक्टिवली दिस टेक्स अराउंड 6 to 7 मिनट्स. दिस इज ओवर एंड अबव रीडिंग टाइम आई एम सेइंग, ठीक है ना? तो
ओवरऑल तेरा वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हुआ? 15 मिनट्स में you have scanned the entire paper, you have solved 6 to 7 questions, and now you have 10 to 12 questions marked for review, जो तुमने एक बारी ऑलरेडी पढ़ दिया है. Are you understanding the importance of this? The thing is, it's all about keeping yourself comfortable, keeping yourself confident while you are attempting the paper. It's nothing more than that. It's completely psychological. But in this question, I'm finding it easy. Okay, trust me on this. I mean, मुझे कोई टफ नहीं लगा इस क्वेश्चन में. I'm finding it easy, but I'm also thinking that इसमें मतलब बहुत कुछ मैप करना पड़ेगा मुझे. मतलब इसके साथ वो बहुत कुछ है इसमें. So in this case, I will actually mark it for review. देखो एक चीज समझो, ये साइकोलॉजिकल है. एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव हो ना, वो अगर टाइम प्रेशर में यू आर अटेम्प्टिंग, देन वो टाइम और ज्यादा लगता है बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर. बट अगर थोड़ा कैलकुलेटिव हो और टाइम तुम्हारे एडवांटेज में है, टाइम तुम्हारे एडवांटेज में कब आएगा? व्हेन यू स्कैन द एंटायर पेपर एंड यू हैव सॉल्व्ड द इजी वंस, जो फटाफट होने वाला था. नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एट दिस स्टेज कि मैंने तो इजी वाले कर लिए, अब मुझे बाकी में से देखना है. तो एट दैट पॉइंट टाइम इज एट योर एडवांटेज. तो वहां पे ये सेम क्वेश्चन विल बी रिलेटिवली लेस टाइम. सो जस्ट टेक इट एज x plus 2 plus y plus 3 plus z and that will be equal to 30 of course. क्योंकि हम लोग 5 ऐड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, जो बैलेंस इक्वेशन. तो इन तीन आइटम का सम इज 30 और इन तीनों का ही प्रोडक्ट हमें मैक्सिमाइज करना है, वेयर वी नो दैट ईच ऑफ देम आर पॉजिटिव. मतलब इफ x y z is positive, then of course x plus 2 y plus 3 and z should also be positive. So implies that इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा. तो 10 10 10 and then that is 1000, right? बस इतना ही करना था इसमें. तो कितना टाइम लगेगा? Hardly 15-20 seconds maximum after reading the question. How much time would you take to do this question if you understand the basics? 15, 20, 30, 40? इससे ज्यादा का टाइम क्या लगेगा? सो गेट द बेसिक्स डन गाइस. आई मीन अगर कहीं पे लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मतलब बस डिसीजन को किया हो जाएगा. अगर कहीं पे लग रहा है कि हाँ चलो ये बेसिक क्वेश्चन था, वैसे हो जाना चाहिए था, सोल्यूशन देख के भी समझ में आ सकता है ना, अरे हाँ ये तो बहुत आसान था, मिस कर दिया. तो वो मिस क्यों किया? क्योंकि बेसिक में कुछ गड़बड़ है. तो गो थ्रू एंड रिवाइज दैट ना. तो एक बार जाके रिवाइज कर लो. So then that can be resolved. So, the number of easies and easy to medium, I mean, यहाँ पे ही 15 क्वेश्चन आ जा रहे हैं. So that makes it quite comfortable to do. तो अगर इन 15 में से if you can target 10-12 questions and then maybe 2-3 questions from here, so that gives you a 13 to 15, correct. So that considerably pushes your score pretty high. So I hope you understand that it's more of strategy. After this session, that should be your biggest takeaway. It's more of decision making. It's more about choosing the right questions. And एक बार देख लेना, recording तो obviously upload होगा इस session का. The next marathon we are going to have is on LRDI. That will be on 25th of October, next Sunday that is. Similar type का होगा, but the strategy would be the strategy discussion will be more how it is suited for LRDI.